हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। पैरामीटर के बेसिस पे इनके बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस? फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग टाइप। सी, it is a procedural oriented language. C++, it is an object oriented programming language. जो C है वो procedural oriented language है। C++ object oriented programming language है। प्रोग्रामिंग टाइप सी, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज अप्रोच। सी लैंग्वेज फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। सी प्लस प्लस फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच। सी लैंग्वेज फॉलो क्या करता है? टॉप डाउन अप्रोच को। और सी प्लस प्लस फॉलोज करता है बॉटम अप अप्रोच को। तो अप्रोच सी में होती है टॉप डाउन, सी प्लस प्लस में होती है बॉटम अप। नेक्स्ट इज फंक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट। C language uses the scanf function and printf function for input and output operations. C++ language, it uses the C in and C out for the input and output operations. Function for input and output. C uses the scanf and printf functions for input and output operations. C++ language, it uses the C in and C out for the input and output operations. Programming type C जो है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अप्रोच सी लैंग्वेज फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को और C++ फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच। Function for input and output. C language use the printf and scanf functions for input and output operations. C++ language, it uses C in and C out for the input and output operations. Next difference is function overloading. C does not support. C++ supports function overloading. Function overloading C जो है वो support नहीं करता। C++ supports function overloading. C++ support करता है function overloading को। Next is inheritance. Does not support. C does not support. C++ supports inheritance. Inheritance C does not support. C++ supports inheritance. Next is virtual and friend functions. C language does not support virtual and friend functions. C++ language supports virtual and friend functions. Next is namespace features. C does not provide the feature of namespace. C++ supports the feature of namespace. Function overloading C does not support. C++ support करता है function overloading को। Inheritance C does not support. C++ supports inheritance. Virtual and friend functions C language does not support. C++ language supports virtual and friend functions. Namespace feature C does not provide the feature of namespace. C++ supports the feature of namespace. Next difference is on the basis of allocation and delocation of memory. C provides calloc function and malloc function for dynamic allocation of memory and free function for delocation of memory. C provides calloc function and malloc function
for dynamic allocation of memory, and free function for delocation of memory. C++ provides a new operator for allocation of memory and a delete operator for the delocation of memory on the basis of allocation and delocation of memory. C provide करता है Kellogg and malloc for dynamic allocation of memory and free function provide करता है for delocation of memory. C++ provide करता है new operator for allocation of memory and delete operator provide करता है for the delocation of memory. Next difference is reference variables. C does not support reference variables. C++ supports reference variables. In the terms of reference variables, C does not support. C++ supports reference variables. Next difference is support for OPS features. C does not support encapsulation, polymorphism, and inheritance. C++ supports encapsulation, polymorphism, inheritance because it is an object oriented programming language. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि C लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसकी वजह से C++ जो है वो सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस कंसेप्ट को, लेकिन C जो है वो सपोर्ट नहीं करता इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस को. तो सपोर्ट फॉर ओप्स फीचर्स को C नहीं करता और C++ जो है वो सपोर्ट करता है ओप्स फीचर्स को. तो ये था डिफरेंस बिटवीन C एंड C++. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.